their ability to influence of life and freedom from violence, economic and social discrimination, and their rights to equality and equity shows that a lot still remains to be done. It is necessary, therefore, to reinforce the rights-based approach for creating an rights of state development progress that the country is experiencing presently. As a generic policy framework, the National Policy for Women 2016 guides various sectors to issue more detailed policy documents that are sector specific. Sectors will be able to integrate the principles contained. Dibakar Sodangi and lectures. My sweetie hearty congratulations to assembled students. I feel proud myself as I got a chance to tell myself something before the huge mass of learned persons. So far as our learned persons analyze the current status of Indian women generally face all types of barriers to success like literacy, domestic violence, lack of motivation and support, and many more. India is country where man dominance is the society. Harmonization development of a country that women should go hand by hand and soldier to soldier with men. So dependent women are not empowered women. If a woman think just that being highly educated and employed that are employed, it is the ultimate goal. They are standing up on their feet and being something is important. Education can bring phenomenal change in women's life, resulting in social transformation in the long run by inculcating, enhancing their confidence, raising their status in the family and society. So far as our aim is concerned, we have to give the women ample opportunity to display talents. Refers to the creation of an environment for women where they can make decisions of their own for their personal benefits as well as for the society. Refers to increasing and to make them confident enough to claim their rights such as freely live their life with a sense of self-worth, respect and dignity. Special welcome for our resource person, Professor Dibakar Sodangi and Jagruti Priyadarshini Sahu from Class 3 Second Year Education Department. Today the seminar topic is Skill Development through Higher Education for Sustainable Women Empowerment in 21st Century. Key term of the paper Women Empowerment, its need and importance. Women in socio-economic development and unemployed, providing equally competent and intelligent, providing equally talent, overall development of society, economic benefit of society, developing self-respect and confidence among the women, participation in the different field, that is political participation, social participation, cultural participation to maintain equality, providing accessibility in affordability learning facilities, need of women empowerment. Empowerment is probably the totality of the following similarly capabilities: having decision-making power of their own, having access to information and resource for taking proper decision, having a range of options from which you can make choices, ability to exercise assertiveness in collective decision-making, having positive thinking on the ability to make change, ability to learn skills for improving one's personal or group power. Chair, respected invited guest and the lecturer of our department, congratulations to my senior, junior and my friends. I am very fortunate getting a chance to deliver something on about
skill development through higher education before the learned person. Today is an auspicious day for us as we all the students of our department and lectures and gather together to share our interactions with each other. In this occasion, we come to know about different facts, idea and knowledge about different issues. I am Kalpana Swai, a student of Saranpur Degree College, Saranpur, in plus 2 secondary arts. Now I am going to deliver about the prescribed topic, recommendation different committee and commission for the women empowerment. On the occasion of International Women's Day on 8th March 1996, two identical resolution for constituting a standing committee of both the houses for improving the status of women were moved in the Rajya Sabha and the Lok Sabha respectively. Different recommendation about women education. First, the Indian Education Commission 1882. National Council for Women Education appointed a committee under the chairmanship of S.N. Hansu Mehta to the problems of a separate curriculum for girls, to equality of human beings and for molding the character of children. The education of women is of great importance than that men. The National Education Policy 1968, the education of girls should receive emphasis not only on grounds of social justice but also because it accelerates social transformation. The National Education Policy 1986 to said that education will be used as an agent of a basic change in the status of women. The national education system will play a positive interventionist role in the empowerment of women. What problem of women education? First, women and girls were socially confined within the four walls of the family. They though if living. Professor Dibakar Sarangi. I am Shraddhanjali Mahapatra from class 3 second year education department. Today the seminar topic is skill development through higher education for sustainable women empowerment in 21st century. Key term of the paper, constitutional provisions for women empowerment. Women empowerment itself elaborates that social rights, political rights and economic stability, judicial strength and all other rights should be also equal to women. Take their decision by their own choice. They should have a high social respect in society. They have equal rights in society and other judicial works. They should not be discriminated while providing any type of education. They should select their own economic and financial choices by their own. There should not be any discrimination between women and men while giving jobs and employment. They should have safe and secure working location with proper privacy. Constitutional provisions. The Constitution of India not only grants equality to women but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women for neutralizing and cumulative socio-economic, education and political disadvantages faced by them. Fundamental rights, among others, ensure quality before the law, equal protection of law. Prohibits discrimination against any citizens on grounds in matters relating to employment. Article 14, 15, 15(3), 16, 39A and 42 of the Constitution are the specific importance in this regard. According to Act 15, ensure to women the rights to equality. Article 15(1) specifically prohibits discrimination on the basis of sex. 15(3) empowers the state to take affirmative actions in favor of women. Article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment. Seminar topic is skill development through higher education for sustainable women empowerment in 21st century. First we know the meaning of empowerment. The absence of a democratic context has contributed to slow progress in empowering women, particularly to slow in South Asia. Empowerment of women that will have lasting impact must involve consciousness raising before the social construction of gender which subordinated women in the family, class, caste, religion and society can be changed.
education that have led to a new conscious self-worthy societal gender analysis access to skill and information. First, we know the abstract of women empowerment. Women to have control over their lives and in society. Skill is the bridge between job and workplace. Skill development is a key in income, earning opportunity and a sustainable rural development. Then we know the women empowerment of India. There are 149.8 million total female workers in India in rural and urban areas. To read his paper or paper shortly. President and Secretary, HOD of the Education Department, and my co-staffs and my dear students. Here I first welcome Dr. Dibakar Sarangi sir as a resource person to this seminar, who will give valuable and well-versed information and well-versed presentation before us on the title Skill Development through Higher Education for Sustainable Empowerment of Women through Higher Education in 21st Century. I am also very happy that I have an opportunity to present my presentation on the title Skill Development through Higher Education for Sustainable Empowerment of Women. And objective of the paper is defining the concept of empowerment and women empowerment. Second is different development through higher education for sustainable empowerment of women. Skill, knowledge and education, particularly important tool for economic growth. डिपार्टमेंट समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन देवी एभलिया गोटे सेमिनार प्रस्तुत करेइछन्ती आ मोर कृतज्ञता भी जणाई स्टेट रु हाराहारी 20टा स्टेट रे भिन्न भिन्न अकेजन रे भिन्न भिन्न एमतिया सेमिनार रे भाग नैछि एवं सेठी ऑनर्स ठार आरंभ करे कि अंडर ग्रेजुएट बा ग्रेजुएट लेवल रो पिला माने पोस्ट ग्रेजुएट पिला माने बहुल भाग भाग नियंती एटा बोधे आज जो विषय वस्तु दिया जे एम्पावरमेंट सशक्तिकरण महिला मानकर जो विषय वस्तु दिया महिला में तब युवपीढ़ी एवं उच्च शिक्षा से शरणकुल महाविद्यालय जे युवपीढ़ी की प्रेरित गोटे परिस्थिति गोटे पेपरटे प्रस्तुत कर निजर मनोभाव को निजर चिंताधारा को ये आगे उपस्थापन करवा यहाँ छोटिया कथा नुहे एवं यहाँ बोधे एम्पावरमेंट बिगिनिंग हो सारी बोली मुझे एवं आशा करी से परिभाषा जे जहाँ संपर्क प्राचीन काल आम संस्कृत रथमहाशय संस्कृत प्राध्यापक प्राचीन सभ्यता संस्कृति भितर भारतीय सभ्यता संस्कृति भितर महिला मान स्थान एवं वर्तमान समय कौन से पुनः अभिनंदन करी जे जेहेतु अंडर ग्रेजुएट पिला माने अछंती greatly changed creating for us lot of opportunities as well as a lot of challenges tough challenges in life तो मोर आलोचना प्रथम भाग रे एक कथा टिके आलोचना करी जे वर्तमान शताब्दी रो ए 2000 पर ठार 2000 रे हठात किना आरंभ होइला एक कथा एबे 2000 जदि हम शताब्दी कथा कहूछु ए जो जीवन धारा जीवन एवं जीवन जो स्थिति परिवर्तित अवस्था में जो वर्तमान पहुंची आम युवपीढ़ी पहुंची आगामी वंशधर ये स्थिति आहरी टे मोर गोटे अधिक उत्कट स्थिति भर देखिए जी जिते आम वर्क एम्प्लॉयमेंट कथा बिजनेस कथा चिंता करवा से आम पिला माने आहरी उत्कट स्थिति देखी जी तेणु से एक जीवन वर्तमान यहाँ जो एवं स्पष्ट रूपे उभा हो सारी 2000 मसीहा पर यहाँ 1980-85 पर जिते कंप्यूटर बा आईसीटी इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मुख्य धीरे धीरे प्रसारित है एवं जीवन भिन्न भिन्न क्षेत्र में तार व्यवहार जो बहुल भाव आरंभ है से जो वर्तमान जो स्थिति वर्तमान जो समाज जो आम 21st सेंचुरी सोसाइटी बा लाइफ कौन जो विश्व जो स्थिति से आरंभ हो सारी कि 2000 बेलू यह पूर्ण रूपे प्रकटित हो सारी यार रूपरेख एवं यार सुजोग एवं आह्वान ये कौन सृष्टि कर भिन्न भिन्न देश लोक
केवल भारतीय युवपीढ़ी पे नुहे से पुरुष हो बा स्त्री हो तो से जीवन चर्चा कौन कि भाई स्थिति अच्छी पूर्वास देवी एवं द्वितीय कथा जे वुमेन एम्पावरमेंट जिते आम एम्पावरमेंट कथा कह बर्तमान निहाती आमको बुझापी पड़ो महिला मान स्थिति कौन अच्छे एवं कौटू कहीं स्थिति आसी आम जो बदलैया चिंता करने कथा पड़ा ये कथा निहाती तार ये कथा टे आगे बुझापी चेष्टा करें मोर जोटा आलोचना द्वितीय भाग में रखी तृतीय भाग में मोर अच्छी जे उच्च शिक्षार मुख्य भूमिका कौन रुच्च शिक्षार जो पाठ्यक्रम उच्च शिक्षार जो पाठ बही सब एवं उच्च शिक्षार जो शिक्षा शिक्षण व्यवस्था एवं पिलाମାନଙ୍କୁ जमी ढंग से बर्तमान से शिखिले के दक्षता हासिल कर एग्जामिनेशन कंडक्ट करूँ से कौन परिवर्तन आसवा दरकार यहाँ हूँ मोर तृतीय आलोचनार तृतीय भाग अच्छी ये तीनोटी भाग को मुझे यथा संभव जल्दी सारे चेष्टा करी क्या आई वोंट ट्राई टू टेस्ट योर पेशेंस तो तार भीतर मुझे सारी आम समस्ते टे आलोचना ध्यान दबा आशा करी आलोचना शेष में आमर पिला मुख्यतः झील पिला जेकोसी छात्र ठार एवं अन्य से जहाँ रही मोर प्रेजेंटेशन से मतामत बा क्लारिफिकेशन आ क्वेश्चन आकार से उपस्थापन करूँ से ध्यान देख शुणा प्रथम भागटी मोर यह रखी 21st सेंचुरी में 21st सेंचुरी जो आम कहते गोटे व्हाई वी गिव ए स्पेशल इंपोर्टेंस व्हाट दिस सेंचुरी इज कैरेक्टराइज्ड विथ या कौन लक्षण रही कौन वैशिष्ट्य रही आम एत बेस एत गुरुत्व कथा कहूँ एत जोर दे कहूँ कहीं पूर्व शताब्दी तमें मैंने तो जन्म होता पूर्व शताब्दी आम मैंने भी पूर्व शताब्दी जन्म होता कि मुझे दिन बचिली आई एम 52 years ना कि मुझे शताब्दी एवं जीवन स्थिति संपर्क में कहीं गभीर भाव आलोचना हो नॉट दैट दिस काइंड ऑफ डिस्कशन हैपेंस हियर इन इंडिया दिस हैपेंस एवरीवेयर while giving you some introduction about me they told you that I visited United Kingdom as well as United States like more or less the same challenges the same issues exist everywhere although they are advanced countries. In respect of life issues and conditions of life and living, there is something little bit advanced, but basic issues of poverty, basic issues of inequity stands everywhere. असमानता सब जगह अच्छी, डिस्क्रिमिनेशन सब जगह भी अच्छी। एवं सुधा भी महिला मान स्थिति भारत में हुए तो बेसी असुविधा स्थिति अच्छी किंतु तार अर्थ नुहे जे अमेरिका रे यूनाइटेड किंगडम रे महिला मान स्थिति पूर्ण रूपे गोटे आइडियल स्टेज अच्छी नट आट ऑल एवं सुधा भी भारत बचिल सो ग्रेजुअली परस्पर जो रही आम जो कल्चर जो संस्कृति जो दृष्टिकोण लेके बढ़ीचे जो नीति नैतिकता लेके बढ़ीचे तासी काम करूनी बाहर को गले ट्रांस बॉर्डर लाइफ बर्तमान कौन सारी जीवनटा एवं देश भितर जहाँ सब आम रही राजनीतिक ये सब स्थिति संस्कृति सभ्यता यहाँ केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता खाली खांटी भारतीय संस्कृति सभ्यता खांटी ओडिशा भितर आ सीमा भितर आम रहूँ ये जो रही प्रादेशिक जो सीमा कौन सी देशर जो रही जोग्राफिकल बॉर्डर ये ता भितर जदि कल्चर दृष्टि देखा जदि जीवन स्थिति दृष्टि देखा सेठी जदिओ गोटे गोटे सीमा रेखा रही पॉलिटिकल कौन बाउंड्री किंतु जीवन क्षेत्र में वर्क एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ये सब को देखला बेलू विश्लेषण कला बेलू ये बॉर्डर गुड़ाक से किसी काम करना बिकज all countries all citizens now they look as if they are citizens of a single mega country called the earth विश्वर ए माने वर्तमान नागरिक जोटा हम पुराना भितर थिला बसु देव कुटुंबक समग्र पहुंची साचे एंड दिस लाइफ सिस्टम इज वेरी प्रोमिनेंट एक कथा नुहे जे कोठी जेते बेले तमे शरण कुलर परिसर बाहर को जीवो देश बाहर को जीवो प्रदेश बाहर को जीवो सेठी मासे 6 मास 2 वर्ष काम करिवो एंड वेरी क्लियरली यू विल फील दिस एटा एबे तुमको होता किछि माने
स्वप्न भाया लगे गप भाया लगे कि जो बाहर को जाकि तुम यू विल बी कंपेल्ड टू वर्क एंड कौन लिव विथ दोज पीपल क्लियरली यू विल कौन हाउ टू अंडरस्टैंड दिस रियलाइज कर पार वैल्यू सिस्टम वैल्यू मूल्यबोध आम कौटा आम उपयोगी कौटा ठीक भूल कौटा करवा उचित ये जो विचारटा आम जो चलनी जो संस्कृति भितर ये परिवार भर बढ़ी आसे गुड़ाक आम चेष्टा करूँ यहाँ मो नीति किसी दिन तले मोर गोटे कॉलेज से झील को कहली गोटे कौन है कम करने पड़ा कौन से 3टा पुओं सागर 4 जणिया टीम से झील सर मुझे जड़े झील केमती कम करी मुझे यू हैव टू लर्न इट देयर इज नो अल्टरनेटिव तो सागर आउ जड़े झील को दि जापर ना तो कल जो ट्रेनिंग सारिकी जब कौटी ओएस ऑफिसर सब गोटे जिले में तो चलने पड़ो से तो सागर आ 2-4टा झील कि तो सागर नथिले बिकॉज व्हाट सिचुएशन इज दैट यू लर्न इट यू चेंज इट दिस इज व्हाट द लाइफ डिमांड्स निजर जो नीति जो ढंग से आम बढ़ी आसीचु से गोटे कौन है 2टा शब्द थे बाहर कर वैल्यू सिस्टम सामाजिक जो मूल्यबोध जो सरणी भितर आम बंचुचु बर्तमान कौन गोटे फ्लुइड स्टेज रोचे फ्लुइड माने पानी पानी अवस्था केमती जोड़ को पार से बुझे निर्दिष्ट किसी स्टेप अच्छी कि नहीं आम मूल्यबोध जो समय जीवन जो स्थित जो भाया मूल्यबोध डिमांड करुच्ची